आज मैं अपने बच्चों को ये बड़ा लाल मी खिलाऊंगी। बाबू चिंटू और चिंकी बहुत खुश हो जाएंगे इतने बड़े लाल मी को देखकर। अरे वाह, उस औरत के पास तो बहुत बड़ा लाल मी है। अगर मैं उस औरत से वो लाल मी छीन लूं, तो इस भयानक गर्मी में लाल मी खाने में बड़ा मजा आएगा। अब चलता हूँ उस औरत से लाल मी छीनने। ये कमीना पंखा भी गरम गरम हवा दे रहा है। अगर कूलर होता हमारे घर तो कितना मजा आता। इतना तेज गर्मी पड़ रही है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मैं चलता हूँ फ्रिज से बर्फ निकाल कर चाटूंगा, थोड़ा गर्मी कम लगेगी। अरे माई रे, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, जल्दी जल्दी घर चलती हूँ। अरे वो औरत, वो बड़ा लाल मी मुझे दे दे, नहीं तो मैं काट लूंगा तुझे। अरे वो बिल्ली तो मेरा ये बड़ा लाल मी लेने के लिए आ रही है, लेकिन मैं ये लाल मी उसे नहीं दूंगी। इसे चिंटू, चिंकी और बाबू खाएंगे। लाल मी दे दो, नहीं तो काट लूंगा तुम्हें औरत। मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिल्ली हूँ। मैं नहीं दूंगी ये लाल मी तुमको, इसे मेरे बच्चे खाएंगे, तुम नहीं। नहीं दोगी लाल मी तो अब काटूंगा तुझको औरत। चिंटू का पापा बचाओ। वो लाल मी दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा औरत। अरे वाह, एक छोटी और मोटी बिल्ली, उसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा, मेरा पूरा पेट भर जाएगा। अरे कोई तो बचा लो मुझे इस बिल्ली से, ये मुझे काट लेगी। अब चलता हूँ उस मोटी बिल्ली को खाने। अरे चिंटू और चिंकी, ये देखो, मैं कितना बड़ा बर्फ खा रहा हूँ फ्रिज से निकाल कर। मैं भी जा रहा हूँ बड़ा बर्फ लाने फ्रिज से। मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। क्या? तो हमें भी खाने को दो ना बर्फ बाबू। मैं नहीं दूंगा, ये पूरा बर्फ मैं खाऊंगा अकेले। चिंकी चल बाबू से छीनते हैं बर्फ। हाँ चलो, इसे पीट कर छीन लेंगे बर्फ। क्या? रुक जा बिल्ली, आज तुझे मैं खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से आ गया मुझे खाने के लिए? अरे कोई भी नहीं आ रहा बचाने के लिए मुझे। अब जल्दी जल्दी चलती हूँ भागते हुए घर में जल्दी से घुसकर दरवाजा बंद कर दूंगी। लाल मी खाने के चक्कर में लगता है आज मैं कुत्ते का खाना बन जाऊंगा रे दादा। बाप रे, इतनी भयानक गर्मी में ये बड़ा लाल मी लेकर भागा भी नहीं जा रहा है। लगता है मैं गर्मी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। भाग, कितना भागेगा तू बिल्ली? जब हार जाएगा तब तुझे मैं खा जाऊंगा। क्या? अरे वो औरत, बचा लो मुझे इस कुत्ते से, ये मुझे खा जाएगा। नहीं, मैं तुमको नहीं बचाऊंगी, तुम ये मेरा लाल मी खा जाओगे। अरे जिंदा बचूंगा तब न खाऊंगा, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। तुम जल्दी मुझे भी उठा के लेके भागो। चल भाग, इस लाल मी से ज्यादा भारी तू है, तुझे लेके मैं नहीं भाग पाऊंगी। गिर गया रे दादा। अब तुझे कौन बचाएगा बिल्ली? अब तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। अरे वो औरत, मुझे बचा लो ना, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। तुझे मैं आज चबा चबा के खाऊंगा बिल्ली। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे अपना बिल्ली। लगता है मुझे उस बिल्ली को बचाना चाहिए, नहीं तो वो टैब बोल जाएगा बेचारा। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम जाके नदी में डूब जाओ। मुझे बेवकूफ बना रहा है तू। अगर मैं नदी में कूद गया तो मैं टैब बोल जाऊंगा और तू बच जाएगा। हाँ। अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा तू। अरे बाप रे, कोई तो बचा लो रे मुझे। ये ले कुत्ता। अरे बपुआ रे, पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर। औरत, तुमने मुझे बचा लिया इस कुत्ते से। तुम ही मेरी असली मम्मी हो। लेकिन मेरे बच्चों का लाल मी तो 2 टुकड़ा हो गया, बर्बाद हो गया पूरा। मैं वो आधा लाल मी खा लूं क्या? नहीं, आधा तू उठा, आधा मैं। घर ले चलकर आराम से खाएंगे इसे। हाँ, घर चलकर खाने में बड़ा मजा आएगा। कहाँ जाके छुप गया बाबू, कहीं दिख ही नहीं रहा। वो देख चिंकी पेड़ पर बैठा है बाबू।
अब जल्दी चलो चिंकी, पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ते हैं। What if I told you there is an object in the universe so large and so powerful that it can swallow entire galaxies, star clusters, and everything in between without even noticing? It is not science fiction, not imagination, but a real cosmic entity that exists billions of light years away. TON 618 is one of the most extreme known objects in the universe, a black hole so massive that it pushes the limits of modern astrophysics. When you try to imagine it, your mind struggles because nothing in our everyday experience can scale to such cosmic proportions. It represents destruction, gravity, and time itself, behaving in ways that defy intuition. What is TON 618? TON 618 is classified as a hypermassive black hole located at the center of a distant galaxy. It is also a quasar, meaning it emits enormous amounts of energy from the hot gas swirling around it. This accretion disk becomes so heated that it can outshine entire galaxies, making TON 618 visible across billions of light years. Our Sun is already massive compared to Earth, but TON 618 is estimated to be billions of times more massive than the Sun. If the Sun were reduced to a grain of sand, TON 618 would still be beyond the size of entire continents of that scale comparison. It is not just large in physical size, it warps our understanding of how matter behaves under extreme gravity. How does it form? TON 618 likely formed through a long cosmic process involving continuous growth over billions of years. It started as a smaller black hole in the early universe and gradually expanded by consuming stars, gas clouds, and merging with other black holes. Each collision and every act of consumption increased its gravitational power, allowing it to attract even more matter. This creates a feedback loop where growth accelerates over time, making such black holes increasingly dominant in their galaxies. Even today, TON 618 may still be growing silently in the distant universe, continuing its endless cycle of cosmic feeding. What happens if you get close? If an object or human were to approach TON 618, the experience would become progressively more extreme with every step closer. At first, space would look completely normal, but gravitational forces would begin to distort everything subtly. As you get closer, tidal forces would stretch your body because gravity would be significantly stronger on one side than the other. This effect, called spaghettification, would elongate matter into thin streams before completely breaking it apart at atomic levels. There is no physical surface to land on, only a gravitational boundary known as the event horizon, beyond which nothing returns. Once crossed, escape becomes impossible, and all known laws of physics cease to function in any predictable way. Why we can't see it directly. TON 618 cannot be seen directly because black holes do not emit light or radiation that can escape their gravity. Instead, scientists observe the surrounding environment, especially the accretion disk formed by matter falling into it. This disk heats up due to extreme friction and compression, producing intense radiation across the electromagnetic spectrum. This is why TON 618 appears as one of the brightest known quasars in the universe, despite the black hole itself being invisible. All the light we detect is actually from matter being destroyed, not from the black hole itself. In essence, we are observing the violence of space rather than the object causing it. Mind-breaking scale. If TON 618 replaced our Sun, the entire solar system would collapse almost instantly due to its extreme gravitational influence.
planets would lose stable orbits and be pulled into chaotic trajectories toward the center. Space-time would become severely distorted, and time would slow down dramatically near the black hole due to relativistic effects. Even light would be trapped inside its gravitational boundary, making escape impossible. The difference in scale between TON 618 and anything in our solar system is so extreme that it becomes almost meaningless to compare them directly. It represents a level of cosmic power that completely exceeds human intuition and everyday physics. Cosmic silence. TON 618 is located billions of light-years away, meaning the light we observe today left it when the universe was still very young. We are essentially looking back in time when we study it, seeing it as it existed in the distant past. It may have changed significantly since then, possibly becoming even larger or entering a different stage of activity. The universe is full of such distant objects where our observations are limited to ancient light rather than real-time data. This creates a gap in understanding, meaning there may be far more extreme objects that we have not yet discovered. The universe is far more mysterious and dangerous than anything we experience on Earth. TON 618 is just one example of the extreme forces that exist beyond human imagination. Every star in the night sky may hide unimaginable cosmic structures far more powerful than anything we know. If you enjoyed this journey into deep space, subscribe for more explorations of the unknown, because the universe still holds countless secrets waiting to be discovered.